Okay, so we begin with this topic of semi-conservative replication. It is considered to be a little difficult and challenging topic to understand. It is also known as the most beautiful experiment in biology, the experiment that was done on the principle of how DNA replication takes place. Okay? Recapping a little bit that we have done about DNA replication, thoda sa agar hum isko recap kare to, what did we do? The entire purpose of doing DNA replication was to understand that all the time this molecule is being replicated inside our body so as to make copies of itself. And this copying of DNA is necessary for the growth of life on Earth, right? DNA ko copy karna hota hai. So when we want to make a copy of the DNA, we all went through this procedure. Okay, we have to open it up. We have to take some help from the extra activated nucleotides. And then those extra activated nucleotides will take help from DNA polymerase. और इस तरह से हमारे पास एक DNA strand से जो कि ये था, we end up with, if you look at this diagram, our original DNA strand is the dark blue color, right? And then we end up with two strands. और अगर आप देखो तो हमारे पास जो दो strands आखिर में बचते हैं ना, तो let's look at this strand. इधर देखो कि this strand, this was the original parental strand. यानी parental strand जो था वो ऐसी एक सीढ़ी की तरह था, a double-stranded helix. We opened it up. ठीक है, we opened it up. We copied this strand, dark blue. इसको कॉपी किया तो हमारे पास एक लाइट ब्लू आ गया जो कि न्यू स्ट्रैंड है. एंड देन वी कॉपीड दिस डार्क ब्लू स्ट्रैंड एंड वी एंडेड अप विद दिस स्ट्रैंड जो कि थोड़ा डिफरेंट था. इसको हमने कंस्ट्रक्ट किया था. वी कॉपीड दिस कंटिन्यूअसली and we copied this in chunks which were known as Okazaki's fragments, and then we finally sealed these chunks together with the help of DNA ligase. Why am I repeating all this is to tell you that whenever DNA is replicated, the parental DNA ends up with two strands, and each strand, if you look at the composition, it is made up of 50% parental DNA and 50% new DNA. ठीक है? हमने तो आपको इसी तरह से ही पढ़ा है. Just let's just wait for the azan to finish. Okay. So very naturally, when we were doing DNA replication, we just understood this as okay, we begin with one strand of DNA, and then when we end up in two daughter strands, so each of the strand contains 50% parental DNA and 50% new DNA. But when this molecule was discovered, the biologists were not sure about how the DNA would be copied. वो इतने श्योर नहीं थे कि इस तरह से ही कॉपी होगा कि 50% parental हो and 50% जो है वो new हो. So they came up with three possible theories of DNA replication. Okay, what are those theories? You can see over here, A, B, and C on this diagram. Look at these three diagrams, girls, both of you, and tell me what differences do you see in these three pictures? Picture A, in fact, जो सबसे extreme left पे picture है ये वाली, it's showing you the original DNA molecule, which is made up of two polynucleotide strands. एक ये वाला और दूसरा जो है वो ये वाला, right? Double-stranded helix. And then one theory that was proposed was that maybe DNA replicates like this, or like this, or like this. So what is the difference between these two theories, these three theories? Take some time to identify the difference. The original DNA molecule is light pink and dark pink in color, right? One strand is dark pink in color and the other strand is light pink in color. Acha. So the first theory that you can see is the theory of, or the result of, conservative replication. Acha. Conserve means to save. So what is being conserved? The original DNA molecule, जो parent DNA है ना, वो conserve हो गया. यानी कि उसका जो pattern था, उसको किसी ने नहीं छेड़ा. The original DNA remains the same as it is. And what do we end up with? We end up with a totally new DNA, which was formed by this original DNA. ये
presumption थी, right? It was just an assumption. Second thing that was put forward was कि maybe इस तरह होती होगी division के, you know, this strand was opened up and this strand was opened up, फिर ये strand copy हुआ और फिर ये strand copy हुआ. तो जब हमने end up किया, you know, when we finished our journey of replication from this stage, we ended up to this stage जिसमें कि क्या है ये, अब आप उसको गौर से देखो. दिस इज वन स्ट्रैंड और जब हमें कॉपी करना है तो हमें दो स्ट्रैंड बनाने, राइट? तो दो स्ट्रैंड हमने कैसे बनाए कि अगर हम इसको देखें इस फर्स्ट स्ट्रैंड में, तो इसमें ये वाला है, पिंक वाला है, दिस इज द पिंक वन ऑफ द स्ट्रैंड, ठीक है. एंड देन द अदर वन इज द ब्लू वन, जो कि इसने कॉपी किया है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से. फिर ये दूसरा वाला पिंक वाला है जो कि यहाँ पड़ा हुआ है, और फिर अगेन दिस इज कॉपीड बाय कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. ठीक है. So this was also one of the theories, possible theories that was put forward. और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, डीएनए ऐसे रेप्लिकेट करता है, एंड देन दे गेव इट अ नेम, एंड द नेम वाज सेमी कंजर्वेटिव. सेमी यानी कि जो ओरिजिनल डीएनए है ना, उसकी कंजर्वेशन हुई है, वो सेव हुआ है लेकिन पार्शली सेव हुआ है, यानी थोड़ा सा यहाँ नजर आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ नजर आ रहा है. सो सेमी कंजर्वेटिव मीन्स sort of conserving or sort of saving the original DNA sample. ठीक है. The third theory that was proposed was कि शायद इस तरह होता है, maybe होता होगा, we don't know, we are not sure because we can't prove कि जब इस DNA से when two DNAs were made, so they were like half new, half old, half new, half old, you know, and a patchwork of new and old DNA. So these three theories were proposed, but of course, none of these was confirmed unless and until in the year 1958, which you can see at the top, these were two biologists, Messelson and Stahl. They did an experiment, and sometimes this experiment is known as the most beautiful experiment in biology, which gave the biologists 100% evidence of the fact that the DNA replicates by this method, semi-conservatively, sort of conserving, sort of saving the original DNA pattern. ठीक है? इतनी बात समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही? Sorry. Okay, let's move on. This was the experiment that was done. Now, both of you have to listen to this part very, very carefully. बहुत गौर से सुनना है. ठीक है? क्या किया इसमें? In fact, where should I explain you? Should I explain you on this diagram or on some other diagram? Okay, I think this is enough. Okay, so what was done was that E. coli, which are the bacterium, they are bacterium, and they can be very rapidly grown in the laboratory. ठीक है? तो E. coli को क्या किया कि and E. coli is also very small in size, and since it's a bacterium, so you know from your prior knowledge कि bacterial DNA is a very simple DNA. It's not even a true nucleus. उस DNA को हम आराम से isolate कर सकते हैं, right, by centrifugation, and we can do experiments on it. और इसमें कोई animal rights or human rights का मसला भी नहीं होता है. We're just experimenting on bacteria, right? So what was done was that somehow the bacterial DNA of E. coli was isolated, and it was those bacteria were grown in a medium. Bacteria को जब grow होना होता है, अगर आपने O level में पढ़ा हो, तो did you do the manufacture of an antibiotic? ये penicillin O level में किया था IGCSE में, है ना? तो उस फॉर्मेंटर में हम क्या करते हैं, we have a nutrient broth, ठीक है? हम वो फंगस ग्रो करते हैं पेनिसिलियम, और उस फंगस से फिर ये एंटीबायोटिक बनता है पेनिसिलिन. तो वी यूज दैट न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, और न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में नाइट्रोजन भी होता है, सॉल्ट्स भी होते हैं. सिमिलरली वी वांट टू ग्रो E. coli, and we grow it in a medium that contains nitrogen, which is known as N15. Basically, we can have many isotopes of elements, and we can have light isotopes and we can have heavy isotopes also. तो इसमें हमने पहली दफा हम क्या करते हैं कि we isolate E. coli, and initially we grow E. coli in a medium that contains a heavy isotope of nitrogen, which is N15. यानी इसका जो वो है,
क्या कहते हैं हम इसको, when we say it's a heavy isotope, so do we call it the relative atomic mass? Yes girls, है atomic mass ही कहते हैं ना हम, because N15 means, is it a combination of protons and neutrons together? Am I right? Yes, miss. ठीक है. अच्छा, तो हमने क्या किया, we took E. coli and we place it into this conical flask, और आपको नजर आ रहा है कि इस conical flask में क्या है, नाइट्रोजन एंड द हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, इसको ग्रो किया. ग्रो करने के बाद क्या किया कि वी टुक अ टेस्ट ट्यूब, इससे पहले ही हमने टेस्ट ट्यूब लिया, एंड we took a material that was known as cesium chloride. ये cesium chloride लिया हुआ है. Cesium is a metal and you must have done this in the periodic table. It's a heavy metal. ठीक है. Now the density of the cesium chloride was already known. एक known density थी. Let's say कि उसकी density इतनी है, right? So we will take the density of the cesium chloride as a standard, right? और फिर हम क्या करेंगे कि अब जैसे 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 हम ये बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, और ग्रो करने के बाद जो हमारे पास एक बाइंडिंग पैटर्न आएगा बैक्टीरिया को, तो वी विल कंपेयर द बाइंडिंग पैटर्न ऑफ दैट बैक्टीरिया विद द डेंसिटी ऑफ सीजियम क्लोराइड. अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा. ओके, लेट्स गो बैक. स्टेप 1, E. coli are isolated, grown in a medium containing nitrogen, and which nitrogen? A heavy isotope of nitrogen. तो E. coli ने क्या किया, टू ग्रो दे विल टेक नाइट्रोजन एज अ सोर्स. तो वो क्योंकि एक नाइट्रोजन क्या कौन सा वाला नाइट्रोजन है, हैवी आइसोटोप है. ठीक है, नाइट्रोजन का, तो ऑफ कोर्स वो ग्रो करेंगे वही नाइट्रोजन लेंगे और इस नाइट्रोजन को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, एंड देन दे विल ग्रो. ठीक है, एंड वी अलाउ दीज बैक्टीरिया टू ग्रो फॉर 1 generation, और दैट इज जनरेशन 0. ये जो 0 है ना, दिस इज जनरेशन 0. ठीक है. अच्छा, हम इसको ग्रो करने देंगे, और ग्रो करने के बाद we will be putting that bacteria into a centrifuge machine and we'll allow the DNA to settle down to see कि वो DNA का banding pattern कहाँ आ रहा है. Remember this girls के I don't know whether you I think आमना ने मेरे साथ किया है chapter cell. तो अगर जो है ना, let's say कि ये आपका सेल है, right? And the cell has nucleus, और न्यूक्लियस के अंदर होता है आपका DNA. इस वक्त हमारा सेल क्या है, बैक्टीरियम, and the bacterium has the loop of DNA. ठीक है, what are we feeding this bacterium with? We are feeding this bacterium with N15. तो ये N15 ले लेगा और इसके अंदर क्या आ जाएगा, heavy isotope of nitrogen आ जाएगा. ठीक है. अब now we want to separate this DNA from the bacterium. So what do? We put it into the centrifuge machine and we allow the DNA to be separated. यानी न्यूक्लियस हम उसको चलाते हैं एक स्पेसिफिक स्पीड पे, तो बाय द ऑर्डर ऑफ द वेट ऑफ द ऑर्गेनल्स द डिफरेंट ऑर्गेनल्स विल सेपरेट, एंड फाइनली हम डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे. अब ये जो डीएनए होगा ना, ये होगा ऑफ कोर्स नाउ सिंस दिस बैक्टीरियम वाज ओनली कंज्यूमिंग नाइट्रोजन, कौन सा वाला नाइट्रोजन, व्हिच वाज द हेवी आइसोटोप, तो हमें एक बैंडिंग पैटर्न नजर आएगा डीएनए का, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे. आई एम एक्चुअली हाईलाइटिंग दिस इज द बैंडिंग पैटर्न. ठीक है, और इसके नीचे लिखा हुआ है 100%. Why 100%? Because this banding pattern is showing you the level of the DNA. ठीक है, ये बैंडिंग पैटर्न आपको क्या दिखा रहा है, डीएनए का लेवल दिखा रहा है कि जब आपने इसको एक जनरेशन तक ग्रो किया इस ई कोलाई को, तो आपके पास एक ही बैंड नजर आ रहा है, और ये बैंड शो कर रहा है कि एक ही तरह के बैक्टीरिया हैं जिसमें एक ही तरह का डीएनए है. और वो कौन सा डीएनए है, द डीएनए दैट हैज the heavy isotope of nitrogen. ठीक है. अच्छा, now you allow this bacteria to grow further, which means from generation 0 you allow it to grow to generation 1, which means now 20 minutes. ये टाइम जो है वो मिनट्स में है, so this is 20 minutes. ठीक है, and this time was of course less than 20 minutes. तो अब 20 minutes more आप उसको ग्रो करने दोगे. तो after 20 minutes what you see is that you see a banding pattern which is one only, एक ही है, लेकिन वो लेवल में इस बैंडिंग पैटर्न से ऊपर है. Now if the band of DNA is at the top, it means कि by the definition of or by the gradient of density, क्योंकि जितनी ज्यादा heavy DNA होगा ना, ठीक है,
उतना ही जो है वो बैंड आपका नीचे आएगा, और जितना ही डीएनए लाइट होना शुरू हो जाएगा तो बैंड जो है वो ऊपर ऊपर चला जाएगा। तो अब ये आपके पास ये बैंड ऊपर क्यों आया? द रीजन इज दैट व्हाट डिड वी डू आफ्टर अलाउइंग दिस बैक्टीरिया टू ग्रो फॉर जनरेशन 0, we took out some bacteria from this conical flask, जो इसमें पहले से ही थे, हमने इसमें से निकाल के और इसको दूसरे conical flask में डाला, and that conical flask had also nitrogen as a nutrient source, but it was the lighter isotope of nitrogen. तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपने यहाँ से निकाला और बैक्टीरियम को यहाँ पे ग्रो होने दिया for some time. You allow it to grow for some time. So this means now if the bacteria is replicating semi-conservatively, रेप्लिकेट का जब बैक्टीरिया ग्रो होता है इसका मतलब वो डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है। अगर वो सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करेगा तो कैसे करेगा कि वो इस तरह करेगा कि आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि बैक्टीरिया का डीएनए ऐसे नहीं होगा, इट विल बी लाइक दिस, राइट? दिस इज द ओरिजिनल डीएनए ऑफ द बैक्टीरियम। और थोड़ी देर बाद जब उसने N14 भी ले लिया, ठीक है, तो हाफ द डीएनए विल बी N15 एंड हाफ द डीएनए विल बी N14. So if we see the banding pattern, वो हमें ऐसे नजर आएगा. You will have one band, thickness band की exactly ऐसे ही होगी जैसे इस band की है, ठीक है, लेकिन the level of this band will be a little higher as compared to the level of this band. Why? Because I will say that ये जो मेरा band आया है ना, ये इसलिए आया है कि इसके पास 50% N15 वाला DNA है और 50% जो है वो N14 वाला डीएनए है। जी गर्ल्स, समझ आ रहा है या सारा फ्रेंच लग रहा है आपको? Yes, I think it will get clear with time. It will get clear with time, yes. So for that, I think it will be best that we also read the text. उससे बहुत clarity आती है text पढ़ने से या कभी कभार वीडियो देखने से भी। Now in this LMS, there is some issue, you know, the videos, they somehow, the screen sharing becomes impossible with the videos. There is some security thing. Let me show you the page. In fact, I was just going through this experiment, so I don't think that this is in your new textbook. It's in the old textbook, but it's still in the syllabus. So this is what was done. Okay. So these are these two guys, Messelson and Stahl. They did this experiment in 1958. They used the bacterium E. coli for, it's a harmless bacterium which lives in the human alimentary canal. They grew populations of this bacterium in a food store that contain ammonium chloride as a source of nitrogen. Okay? Then the experiment relied on the variation in the structure of the nitrogen atoms. All nitrogen atoms contain 7 protons, but the number of neutrons can vary. So if the number of neutrons can vary, the relative atomic mass will vary. So in this case, we will be having different isotopes of nitrogen. Aski chemistry mein abhi nahi ja rahi, right? You want to stick to the biology of it. The nitrogen atoms in the ammonium chloride that Messelson and Stahl supplied to the bacteria were the heavy isotope. पहले उन्होंने इसको ये वाला nitrogen दिया जो कि heavy isotope था. So the bacteria will be using the heavier isotope of nitrogen to make their DNA. They were left in this heavy isotope long enough for them to divide many times. बहुत ज़्यादा दफा उन्होंने divide किया, बहुत सारे replication cycles हुए तो उसमें सिर्फ N15 DNA था, N14 नहीं था. Since it was a heavy isotope of nitrogen, so it gave us the band that you saw on that picture, and it was a little down. फिर क्या हुआ? Some of these bacteria were then transferred to a food source now, in which the nitrogen atoms were all N14. Then they were left long enough for their DNA to replicate once about 50 minutes, and others were left long enough for their DNA to replicate 2 times, 3 times, or more times. And then the DNA was extracted from each group of bacteria. और उस DNA को centrifuge machine में डाला गया और जो है वो the samples were placed into a solution of cesium chloride and spun in a centrifuge. The heavier the DNA was, the closer to the bottom of the tube it came to rest, and
they saw this result. ठीक है, यही रिजल्ट उस वाली स्लाइड पे भी है कि look here, sample 1, you get one band of DNA at the bottom of the test tube. ठीक है, when did you get it? When DNA from bacteria grown with only N15 isotope of nitrogen. You grow it for another, you now take out these bacteria, put it into an N14 source, and now you again grow it. You get a thicker band. इसमें आपको थोड़ा सा thick मिल रहा है band. Thick पता है क्यों मिल रहा है? Thick इसलिए मिल रहा है कि this is a hybrid band. It's a band which is half N14 and half N15. और इसका level भी थोड़ा सा ऊपर है. ठीक है? फिर इसको आपने ग्रो होने दिया और घंटों तक many cycles. So now you get two bands. ठीक है, you get two bands and let's compare the level of these bands. Let's see. अगर हम इसको एक रूलर रखें ना इसके ऊपर, तो the level of this band and this band is exactly the same, and the level of this band is of course higher than this band. तो इसका मतलब ये हुआ कि these two bands, which means this band and this band, they have the same density but they have different volumes. Density same है, ठीक है, level पे same है, लेकिन इनकी thickness कम है. Thickness कम क्यों है? क्योंकि अभी जो ये band था ना, ये वाला, हमने इसको कहा कि this is a hybrid band. ठीक है, why? Because it has 50% N15 DNA and 50% N14 DNA. अब ये जो 50% N14 and N15 है, जब ये ग्रो करेगा तो थोड़े साइकिल्स के बाद क्या हो जाएगा, क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन हो रही है ना, हर साइकिल पे जो पुराना वाला पेरेंट वाला डीएनए है वो अब आहिस्ता आहिस्ता गायब होता जा रहा है, राइट? सो व्हेन वी मूव फॉरवर्ड टू द फर्दर साइकिल्स, तो वी विल subsequently slowly and gradually getting rid of the old वाला डीएनए. तो ये बैंड जो कि हाइब्रिड वाला बैंड था ना, अब ये है तो सही हमारे पास, लेकिन ये पतला हो गया है. सो आई वुड से नाउ आई हैव टू बैंड्स. ठीक है, और उस टू बैंड्स की थिकनेस जो है, अगर मैं इसकी थिकनेस को देखूं, this thickness is exactly the same as this. So I would say 50% hybrid band and 50% N14 only. क्योंकि ये जो लेवल है ना, क्योंकि ये देखो, this level was for N15 only. This level is for N14 plus N15. And this level, of course, ना ये N15 से belong करता है ये वाला level, ना ये हाइब्रिड से बिलोंग करता है, ये इन सबसे ऊपर है. सो इट शुड बी द लाइटेस्ट, सो इट्स N14. और अगर हम इसको एक और जनरेशन ग्रो होने देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है कि जो आपका जो ओरिजिनल वाला था ना N15, आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, पहले 100% था, फिर 50% हो गया, फिर और भी कम हो गया, और अब इतना पतला सा रह गया है, राइट? सो इट्स so thin. So now I would say that this is 25% hybrid and it's 75% N14. Yes, Alia, you tell me, have you understood this? With the first two diagrams are clear, miss, but for the last two tubes, I don't understand, miss, how the banding is observed like that. Banding is only observed, okay, let's go to this slide. The banding is only observed by allowing the bacteria to grow more and more and more. ठीक है, बैक्टीरिया बस रेप्लिकेट हो रहे हैं बार बार, उनका जो रेप्लिकेशन टाइम है ना, उनको ज्यादा दिया जा रहा है ताकि वो और ज्यादा सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन करें. बिल्कुल इस तरह के जैसे इफ यू लुक एट दिस डायग्राम ना, जस्ट अ मिनट, ये वाला जो था ना सेमी कंजर्वेटिव वाला, कहाँ गया, ऐसे फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार्ट किया है इस स्ट्रैंड से, ये N15 था, अब ये जब कॉपी करेगा तो N15 ही बनाएगा. यहाँ से आप निकालते हैं बैक्टीरियम को एंड यू पुट इट इनटू अनदर मीडियम व्हिच इज N14. तो अब बैक्टीरिया क्या कर रहा है, टू ग्रो इट इज टेकिंग N14 नाइट्रोजन ऑल्सो. तो अब जब वो कॉपीज बनाता जाएगा तो क्या होगा, उसके डीएनए में N15 भी होगा, N14 भी होगा. और फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट ऐसे हुआ और फिर ये ऐसे बन जा रहा है, राइट? इफ यू नाउ अलाउ दिस स्ट्रैंड टू रेप्लिकेट, तो ये अलग दो डॉटर स्ट्रैंड्स बनाएगा. ठीक है, इस स्ट्रैंड को आप रेप्लिकेट करने दोगे तो ये अलग डॉटर स्ट्रैंड्स बनाएगा. तो होगा ये एक्चुअली कि एज द रेप्लिकेशन साइकिल्स आर कंटिन्यूइंग, स्लोली एंड ग्रेजुअली द अमाउंट ऑफ द पेरेंटल डीएनए, जो ओरिजिनल डीएनए था ना, वो कम से कम होता जाएगा. ये इसका पर्पस सिर्फ यही है बताने का. फॉर एग्जाम्पल इसमें है ना, ये देखो,
Have a look. K, generation 0, 100% DNA, that is N15. Then generation 1, 100% DNA, but a band which is a little higher above, higher bhi hai, thick bhi hai. Thick इसलिए कि now it's a combination of N15 plus N14. फिर ये 50-50% हो गया, क्योंकि you know what, you are now, ये जो बैंड अब रेप्लिकेट होगा ना, तो ये बैंड ऑफ कोर्स डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएगा एज कंपेयर टू कि जब ये बैंड रेप्लिकेट हो रहा था, उस वक्त इसके पास सिर्फ N15 था एज ए नाइट्रोजन सोर्स. आपने इस बैक्टीरिया को निकाल के इसके अंदर डाल दिया, तो अब जब वो रेप्लिकेट करेगा तो उसके अंदर N14 वाला आइसोटोप भी आएगा. N14 आइसोटोप विल रिजल्ट इन द डीएनए बिकमिंग लाइटर, लेकिन इतना लाइट नहीं होगा क्योंकि इसके पास N15 भी होगा. तो वो एक बैंड बनाएगा जो इस बैंड से ऊपर होगा थोड़ा सा, लेकिन इतना ऊपर नहीं होगा, ठीक है, और एक ही बैंड बनेगा. अब आप इस वाले डीएनए को जब अलाउ करोगे कि वो रेप्लिकेट करे, तो वो जब अपना रेप्लिकेशन साइकिल कंप्लीट करेगा, यू विल एंड अप विद नाउ 2 बैंड्स. एक और, लेकिन इन 2 बैंड की थिकनेस जो है वो कम हो जाएगी. एक बैंड की डेंसिटी इसी बैंड की डेंसिटी से मैच करेगी. अगर डेंसिटी मैच कर रही है ना, डेंसिटी मैच करने का मतलब कॉम्पोजिशन सेम है. So this means that if the density of this band is equal to the density of this band, their compositions are the same. So this band is also a combination of N14 plus N15. और आहिस्ता आहिस्ता आप देखो कैसे इसके जो आपका ओरिजिनल डीएनए था ना, वो कैसे आहिस्ता आहिस्ता कम से कम होता चला जा रहा है. देखो 50% हो गया ये वाला, फिर ये और थिन बैंड हो गया 25%, एंड देन 12%, एंड सो ऑन. समझ आ रही है बात या नहीं? Understood, miss. Clear. And this will become more clear if we do a question. ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं. ये देखो, ये भी इससे भी बहुत सही समझ आ रहा है. देखो, पेरेंटल स्ट्रैंड, DNA, double polynucleotide. Now when this DNA, you want to replicate this DNA, है ना, हमें replicate करना है, तो हम replication के लिए क्या करते हैं, इसको अलग करते हैं, इसको अलग करते हैं. ये वाला अपना कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से एक स्ट्रैंड बनाएगा, ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से स्ट्रैंड बनाएगा. ठीक है, लुक, जनरेशन 1 पे अभी भी आपके पास 50% पुराना वाला डीएनए, जनरेशन 2 पे इसकी परसेंटेज कैसे कम होती जा रही है ना, क्योंकि ये जो आपके पास आया है वो इससे आया है ना, इससे तो नहीं आया. तो एट एवरी स्टेप व्हाट इज हैपनिंग, ये जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है ना ओरिजिनल वाले डीएनए की, वो कम से कम होती जा रही है. और इसके कम से कम होते जाना जो है ना, gave these two scientists Wesselson and Stahl an evidence के the DNA replicates semi-conservatively. Semi-conservatively, sort of conserving the original pattern, not 100% conserving the original pattern, लेकिन sort of. ठीक है, अच्छा. Do this question. What can be the answer? आराम से पढ़ो इसको. So as far as your syllabus is concerned, you need to know the differences between DNA and RNA, and lots of differences have been shown to you. You can see them, go through it thoroughly, and if you have a question, you can ask me. And just to tell you that we have 3 kinds of RNAs. We have the messenger RNA, we have the ribosomal RNA, and the tRNA.
और तीनों पे अलग अलग सवाल आ सकता है. एंड बिसाइड्स माय प्रेजेंटेशन व्हिच यू कैन सी right now, I have an extra presentation जिसमें extra detailed notes on questions from this chapter are made. So I will inshallah share both these presentations with you ताकि आप इसको पढ़ सको. उसमें ज़्यादा notes दिए हैं. So double stranded, single stranded, that's a double helix. This is not a helix. उसमें deoxyribose sugar है. This has ribose sugar. And what else? Yes, it has hydrogen bonding between all bases. Hydrogen bond may be present between some bases. The ratio of A plus G to C plus T is always equal to 1. And over here, the ratio of A plus G and C plus U varies. DNA is a long, long molecule. RNA is short. DNA is always of one type. DNA ही होता है. अलग-अलग तरीके के DNA नहीं होते. RNA can be messenger RNA, ribosomal RNA, and transfer RNA. And this is the molecular difference. अगर आपको exam में, you're shown the molecules, you should know, the examiner expects you that you should know how to draw an RNA nucleotide and a DNA nucleotide. आपको आनी चाहिए, ठीक है? बिल्कुल आपको ऐसे जो पेंटोज शुगर है ना, ये बनाना आना चाहिए. आपको exactly पता होना चाहिए कि on which carbon number the oxygen is absent in a deoxyribose sugar, तो वो carbon number 2 है, ठीक है? और अगर आप राइबोज शुगर को देखो तो कार्बन नंबर 2 में आपके पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है, and which shows that this is RNA and not DNA. And just to show you क्या इसमें दिखा है, RNA, right? So at the top you can see mRNA. This is the mRNA, simple. mRNA होता है, usually mRNA जब बना हुआ होता है ना उसमें diagrams में, so it's always shown like this, a single stranded molecule. और इसमें जो ऐसे करके लकड़ियां बनी हुई होती है ना, these are the bases, ठीक है? So mRNA. And of course ये जो हम बना रहे हैं, this thing is a sugar phosphate backbone, and these which I have made are the bases. और इसको अगर आप यहाँ देखना चाहो तो it's the same thing. This is your sugar phosphate backbone, which is equal to this, and these are your bases, which is equal to this, ठीक है? And then the tRNA कितना different है mRNA से. So इसलिए पीछे टेबल में लिखा हुआ था ना कि mRNA may or may not have hydrogen bonds. तो sorry, RNA may or may not have hydrogen bonds. तो mRNA में तो कोई hydrogen bonds नहीं है, लेकिन tRNA में है. tRNA, many students think that tRNA is a double-stranded molecule. ये double-stranded नहीं है क्योंकि ये लगता है double-stranded, but it's single-stranded. It's just folded, ऐसे करके. It's folded. ठीक है? This side is the amino acid attachment side. This side is the place where the 3 anticodons are placed. ठीक है? Every tRNA is specific. Every tRNA carries a specific amino acid that corresponds with the specific anticodon. ठीक है? हाँ, hydrogen bonds हैं, बिल्कुल है, लेकिन कहीं-कहीं, right? And then we have the rRNA also. Again, there is another diagram of the tRNA. So, just to give you an idea about, when such kind of questions are asked, it explain the role of ribosomes in translation. So, ribosomes provide a site of attachment for the mRNA, and it moves one codon at a time along the mRNA. What moves one codon at a time? Of course, the ribosome. The large subunit of the ribosomes can have space for 2 tRNA molecules at a time. Sorry, this thing is rubbed. And different ribosomes can be used at one time, which is known as polyribosomes, to increase the efficiency and the speed of translation. Polyribosomes. I think I have told you about polyribosomes before. Have I told you, Amna? Amna, can you hear me? Yes, miss. So this is the role of ribosomal RNA, the role of tRNA. I'm just sharing this with you ताकि आपको थोड़ा अंदाजा हो कि किस तरह के questions आते हैं.
लाइक tRNA के अगर क्वेश्चन आता है इस पे 2-3 मार्क्स का कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ tRNA इन ट्रांसलेशन. सो इट्स अ कैरियर ऑफ अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम इन ट्रांसलेशन. लेके आता है अमाइनो एसिड. Anticodon on the tRNA pairs with its complementary codon and mRNA. tRNA is highly specific for a particular type of amino acid it carries, and due to this process, peptide bond formation takes place between successive or successive amino acids. tRNA can also be recycled, and mRNA recycle तो नहीं होता, लेकिन mRNA use होके फिर ये destroy हो जाता है, right? अच्छा, let's go to. Acha, girls, do you have some extra time today? If I extend my class to like 20-25 minutes. जी Miss, I girls. have a class after this actually. अच्छा, you have a class. अच्छा, तो ठीक है, अब जितना भी time है हम कर लेते हैं. Mutation कर लेते हैं. What is your understanding? Alia, you tell me, what do you understand by mutation? It's a change in the base sequence of DNA, Base sequence of DNA. which can be the cause of a lot of genetic predisposition and diseases. Diseases. अच्छा. So, change in the base sequence of DNA. And how do you define gene? Gene को कैसे define करते हैं? What's a gene? It's a section on a chromosome that contains DNA. It's a section of the chromosome that contains DNA, and mutation is defined as any random change in the base sequence or the nucleotide sequence. And this kind of a random change can be a change in the structure of the gene or the structure or the number of the chromosome. इसी तरह से ही आपको IGCSE में पढ़ाया गया था कि a mutation is a change in the gene. और change in the gene का मतलब ये है कि change in the nucleotide sequence. अब nucleotide sequence जब change होती है तो gene structure change हो जाएगा altogether, या फिर आपका structure of the chromosome या number of the chromosome change हो जाएगा. Now, when you were in O levels, you were only taught about one mutation, and that was Down syndrome, in which the number of the chromosomes was changing, and that was K. On the 21st pair, there was one extra chromosome, and that was Down syndrome or trisomy 21. Abhi jo hum karenge na mutations in AS, we'll be doing almost all mutations, they affect the structure of the gene. Okay? So let's see how it affects the structure. When you were doing biological molecules, you studied about hemoglobin, right? Hemoglobin is what kind of a protein? Alia? Primary, It's a secondary, globular protein. globular protein. Tertiary, quaternary किस तरह की है? But tertiary. Quaternary नहीं? How many polypeptides chains can you see in this picture? It's 4 polypeptide chains. तो quaternary है ना? Yeah, Miss quaternary. Right? अच्छा, it's a quaternary protein. It is made up of heme and globin. अच्छा, अब इस चीज को गौर से सुनना है. जो heme part है ना, वो आपको बीच में नजर आ रहा है in the form of वो red bread जो बना हुआ है ना, that's the heme part. ठीक है? And that's the part where you have the iron atom and the oxygen will bind. जो globin part है ना, वो है इसका असली वाला protein part. ठीक है? And we have 4 globin chains. What are those? We have 2 alpha chains and 2 beta chains. In your syllabus, under the topic of mutations, we teach sickle cell anemia. So sickle cell anemia is a disease in which the structure of the hemoglobin is changed. तो कौन सा वाला structure? Heme नहीं change हो रहा, heme बिल्कुल सही है. ठीक है? Alpha globin chain भी बिल्कुल first class है. What is changing is the structure of the beta globin chain. ठीक है? And why is this changing? Because there is a change in the gene structure. Because there is a change in the nucleotide sequence. कैसे है वो change? For example, all of us, ठीक है, all human beings, अगर हमें sickle cell anemia नहीं है, इसका मतलब कि we have a normal variety of hemoglobin जिसको हम लिखते हैं hemoglobin A. When I write like this, hemoglobin A, it means it stands for adult hemoglobin, normal वाला. ठीक है?
अच्छा, अब हमारा जो नॉर्मल अलील है ना, अलील इज एक्चुअली अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। तो अगर हम उस अलील का देखें ना, अमाइनो एसिड सीक्वेंस दैट इट कोड्स फॉर, इट इज वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनीन, प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड, लाइजीन। कैसे? ये इस तरह है। लुक, यू हैव स्टडीड, दिस इज व्हाट यू हैव स्टडीड इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, आपने क्या पढ़ा है? डीएनए मेक्स आरएनए एंड आरएनए मेक्स प्रोटीन। ठीक, डीएनए कहाँ है? इट्स इनसाइड योर सेल। ठीक है, एंड उसी डीएनए का एक पार्ट क्या है? जीन और अलील। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द अलील। कौन सा वाला अलील? HbA अलील, नॉर्मल अलील। ठीक है, अब जब मैं ये कह रही हूँ HbA अलील है, तो इसका मतलब, इन अदर वर्ड्स, आई एम सेइंग इट्स डीएनए। सो दिस इज योर डीएनए। ठीक है, और कौन सा डीएनए है? ये HbA अलील है। तो दिस मीन्स दिस डीएनए हैज अ कोड, a DNA code that will be translated into an RNA code, and the RNA code will be translated, वो जो tRNA सारे काम करेगा वो एक कोड में ट्रांसलेट होगा, और वो कोड कौन सा है? वो ट्रांसलेट होगा into a sequence of amino acids, and that sequence of amino acids should be this. अगर आपके पास नॉर्मल अलील है तो it should be this, 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 this and this. ठीक है, अच्छा, if a person is suffering from sickle cell anemia, then his sequence of amino acid will change. What difference do you see, Alia, between this sequence and this sequence? इन दोनों में क्या difference है? कौन सी चीज different है? The amino acid that glutamic is changed to valine. The amino acid glutamic acid is changed to valine. अच्छा, why is this change? So it is changed. The reason why this amino acid sequence is changed is कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन A अलील नहीं है, बल्कि हीमोग्लोबिन S अलील है। ठीक है, अब हम एक हीमोग्लोबिन S अलील बना लेते हैं with this blue color. So there is another person who has got hemoglobin S allele, और अगर आपके पास S allele पड़ा हुआ है तो फिर इसका मतलब डीएनए कोड भी चेंज हो गया। अब मैं चेंज डीएनए कोड बना रही हूँ। This is the change DNA code. So if the DNA code is changed, the RNA code will change, and if the RNA code is changed, the protein sequence will also change, and hence the person will suffer from sickle cell anemia. अब ये क्यों हो रहा है? ये हो इसलिए रहा है because the fact that a different sequence of amino acids are taking place is that there is some problem in the HB allele, the allele that codes for hemoglobin. And what is that problem? The problem is this. This is the problem. And with that, I just have 2 more minutes and then I'll end. I'm reading from here. The gene which codes for the amino acid sequence in beta polypeptides. कौन से बीटा पॉलीपेप्टाइड्स की बात हो रही है? मैं बीटा ग्लोबिन चेन की बात कर रही हूँ, ऑफ द हीमोग्लोबिन. इट्स नॉट द सेम इन एवरीवन. व्हाट्स योर टेक्स्ट बुक सेइंग कि हर किसी की बॉडी में जो जीन दैट कोड्स फॉर the synthesis or the amino acid sequence of beta polypeptides, the beta globin gene, is not the same. If we are normal, this means we have this gene. If somebody is abnormal, if he is suffering from this disease, he has this gene. तो if you have this gene, इसका मतलब कि अगर ये जीन ट्रांसक्राइब होगी और फिर उसके बाद ट्रांसलेट होगी, तो वो आपको ऐसा सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड बनाएगी. And if you will have this gene, it will give you this different sequence जिसमें कि एक ग्लूटामिक एसिड के बजाय वैलिन है. तो ये क्यों हुआ? The change actually happened at the DNA level, and that change was as follows. The base sequence CTT is replaced by CAT. सिर्फ क्या चेंज हुआ? CTT is changed by CAT. यानी कि सिर्फ एक T के बजाय A आ गया और उससे टोटली जो है वो अमाइनो एसिड सीक्वेंस चेंज हो गया. Right? So I just end over here. In other words, I would say that I have just given you a
brief intro to the topic of mutation. This is a difficult topic. इस पे questions भी काफी difficult आते हैं. तो inshallah we will be covering this next time. And